Hello, good evening. I hope you all are doing well and I welcome you to the session today and welcome to the Sikshastra Education. And here we are going to provide you with all the topics relevant to your syllabus. आपको इसी प्लेटफॉर्म पे सभी सब्जेक्ट्स के प्रॉपर लेक्चर्स मिलेंगे जिससे आपकी स्टडीज़ और इजी हो जाएंगी क्योंकि 10th बोर्ड है। आई गेस सबको स्ट्रेस ऑलरेडी होगा कि 10th है सब जगह से प्रेशर आ रहा होगा कि इस साल तो आप बोर्ड क्लासेस में हो, इस साल तो बोर्ड्स हैं, राइट। सो इस प्रेशर को थोड़ा सा रिलीज़ करने के लिए हम आपके लिए एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स लेके आए हैं। तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको कंटेंट अवेलेबल होता जाए और न्यू अपडेट्स के लिए आप नोटिफिकेशन बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई भी लेक्चर अपलोड हो आपको पता चले। ओके, सो विद दैट नोट लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक टुडे. So today we are going to start with the very first topic of your biology, right? So what is the topic here? The topic that we are going to start with is the life process. Okay, this is the chapter 5 of your syllabus, right? We will be starting with this say. So chapter 5 life processes is the name of the chapter. This is the very first chapter of biology. Okay, I hope you all are very much aware about what is life क्योंकि हमने छोटे क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेस पे हम उन्हें लिविंग या फिर नॉन लिविंग कैटेगराइज करते हैं. ओके, सो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसकी वजह से वो लिविंग हैं, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पा रहे हैं. तो let us proceed ahead and start with the topic. So before moving ahead towards the chapter, I have an overview for you all that is going to make you aware about what are you going to learn in this chapter. हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है. So सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, we will be learning about what are life processes, right? What are life processes? That means what are those processes which you are categorizing as life processes, right? Then under that we will be introducing you with the topics, right, ki these are the life processes and why are these life processes, this I will be explaining you. Okay, and under that only you will be learning about different life processes, right? So the very first process that we will be discussing will be the nutrition. Okay, here we are going to talk about how an organism is going to obtain their nutrition. Okay, like how are they going to obtain their nutrients so that they can grow, develop, get themselves energy for doing different activities of their day-to-day life, right? Now as you know, the cellular organization, the structural organization of an organism is different from one another. So on the basis of that, how are you categorizing them? That is autotrophic, heterotrophic, right? So we will be talking about what is autotrophic nutrition, what is heterotrophic nutrition, then we will be talking about nutrition in human beings. Moving ahead, we will be discussing about respiration, which is another life process, and in the after respiration we will be talking about transportation. Okay, transportation is a very important life process, right? In the transportation you will learn about the system involved in the transportation. You will talk about different components of the same, what are the characteristics, what are the processes involved, everything in detail we will be discussing in the further sessions. Okay, then transportation is not only observed in animals but you are observing the process of transportation in plants also. So how plants are designed to perform this process, that are like that we will be discussing. Okay, then we have excretion. So what is excretion, what is the system involved in this process, how is this process different from other processes of your body, that is all we will be covering in excretion. So this was the overview of the chapter. Okay, so what was the overview? First
What are we going to discuss? We will be discussing about the characteristics feature of the living organism, what are life processes, and in detail, one by one, we will move ahead with different life processes. So the very first topic that I already told you is introduction to life processes. Okay, so as you know, how are we going to talk about that this particular organism is living and this is not? How can you say that this particular organism is living and this is not? So we are going to have some list of the characteristics or the function which a living organism can do and non-living things cannot do. For example, I have a pen with me, and this pen cannot move from the desk if I will be keeping it until and unless some other person can come and pick it up. Okay, but I can move. इफ़ आई वॉन्ट टू गो आउट ऑफ दिस रूम, मैं यहाँ से जा सकती हूँ, जब मेरा मन करेगा मैं जा सकती हूँ, बट ये पेन अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकता. ठीक है. इसके अलावा I can show growth and development, but this pen will remain like this only for years. They are not going to grow. Okay, so these are basic general characteristics of a living organism, which are nowadays we are not considering also, because if I talk about the movement, plants are not changing their position, but still they are moving. Okay, so plants are also considered as living, right? In some cases, there are chances that I have a particular place at which there was some dust particle and I am not cleaning it for a long time. After some time, I will see accumulation of more dust over there. So that means the area they are covering will be more than before, right? जो area उन्होंने अब cover किया वो पहले से ज़्यादा हो गया. So अब ये they are growing. दिस इज द लाइक दे आर स्प्रेडिंग ओवर, मास बढ़ रहा है. तो फिर इस पॉइंट को हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कंसिडर करना बंद कर दिया. तो अब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करेंगे अगर, तो क्या होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म का पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, दे आर परफॉर्मिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ओके, विच इज़ न्यूट्रिशन, respiration, transportation and excretion. Okay, so these life processes, because of which you call them living. Rather than this, all the living organisms can reproduce. What is reproduction? The process of giving birth to the young ones. Okay, an individual can divide and they can form their multiple copies. Okay, so that is reproduction, which is a characteristic feature of a living organism. लेकिन living organisms reproduction को हमने लाइफ प्रोसेस कंसिडर नहीं किया है क्योंकि reproduction के बिना लाइफ चलती है, बट ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का. इसके अलावा कॉन्शियसनेस भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये सभी एक्टिविटी होती हैं. तो इस वजह से हम उन्हें लिविंग कहते हैं. ठीक है. अब लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बिना लाइफ का सस्टेनेंस बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, उन्हें हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं. जैसे कि बेसिक लाइफ प्रोसेसेस की अगर हम बात करें तो दिस इज न्यूट्रिशन, ओके, then we have respiration, then we have transportation, and then we have excretion. Okay, so nutrition, respiration, transportation, excretion, these are the basic life processes without which this you can say life is not possible without them. कोई भी एक प्रोसेस अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं हो रहा है तो हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को लिविंग कंसिडर नहीं कर पाते हैं. हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स का प्रॉपर फंक्शन करना ज़रूरी है. ठीक है. अगर एक भी ऑर्गन का फंक्शनिंग रेगुलर नहीं है तो हम बीमार हो जाते हैं. किसी ऑर्गन फेलियर की वजह से पर्सन कैन डाई एज वेल. सो दीज important processes are called life processes because in the like misfunctioning of any of the organ associated with these processes,
the person can die also, right? So what is the definition of life process? The definition is the basic function that are performed by living organisms for their survival and body maintenance are called life processes, and nutrition, respiration, transportation and excretion are the important life processes. Now let's move ahead and start with the very first life process, that is nutrition. Okay, so what is nutrition basically? Nutrition, the process that is making sure that you are obtaining all the essential nutrients which are important for growth and development and production of energy, यानी कि वो processes जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जिनकी वजह से आप ग्रो कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं और आपकी बॉडी में होने वाले सारे फंक्शंस एक्टिवली परफॉर्म कर पा रहे हैं, ठीक है? सो दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. Okay, now as you know, the cellular like all the organisms are different in their structural organization. You cannot say that amoeba resembles paramecium, right? So, cellular organization is same, but both of them are different, है ना? If you can find, like in your higher grades, you will find out that both of them belong to different groups in a same kingdom. Okay, so this is how, when two individuals are different from each other, you cannot say that they are performing the process of nutrition in a same way. Okay, so nutrition cannot be performed by all the organisms in a same way, because of which we are categorizing the process of nutrition into two, that there are two modes of nutrition. Organism can obtain their food either by autotrophic nutrition or heterotrophic nutrition. Now move towards autotrophic. Autotrophic term comprises of two terms. So here is first term, which is called auto. Auto means self and trophic means nourishment. Okay, so autotrophic. So the organisms that can prepare their own food, they are not dependent on others for the food, that are called autotrophs, and this mode of nutrition is called autotrophic nutrition. Okay, so the mode of nutrition in which organism are not dependent on others. They can prepare their own food. Okay, so the mode of nutrition in which an organism can prepare their own food, that mode is known as autotrophic nutrition. Moving ahead towards heterotrophic nutrition. So hetero, as autotrophic comprises of two terms, that is auto means self and trophic means nourishment. So hetero also is comprising two words, like hetero and trophic again. So hetero means others and trophic again means nourishment. So you can define heterotrophic nutrition as the mode of nutrition in which the organism cannot prepare their own food and they are dependent on others for the food. Okay, so mode of nutrition in which organism depends on others for food, that is called heterotrophic nutrition. Organisms who are performing autotrophic nutrition are autotrophs, whereas organisms
who are performing heterotrophic nutrition are heterotrophs. Okay, I hope this is clear to all of you. And if in case you have any doubt, any queries, you can post your doubts in the comment section and I will be very happy to help you. Okay, so now we will be moving ahead and discussing the other topic, that is autotrophic nutrition in detail. Okay, so here is the definition for you all that you can take screenshots of or you can note it down in your notebooks, right? So autotrophic nutrition, kind of nutrition in which organism can synthesize their own food. Example, green plants. Green plants are performing the process of autotrophic nutrition only. Why? Because they can prepare their own food by the process of photosynthesis. Okay, and heterotrophic nutrition, it's a kind of nutrition in which organisms do not possess the ability to synthesize their own food and they are dependent on autotrophs for their food supply directly or indirectly. Indirectly, why I am writing indirectly? Because we have certain carnivores which are not dependent on plants for their food, right? So the herbivorous will intake plants and then carnivorous will be eating those herbivorous. So indirectly they are dependent on plants. Okay, so that's why the term directly and indirectly mentioned over here. Okay, so first type of nutrition that we will be discussing is autotrophic nutrition. So as I told you before that autotrophic nutrition is the mode of nutrition in which organism can prepare their own food, and autotrophs are the organisms who are performing autotrophic nutrition. So example mentioned here is green plant, and I already told you that plants can prepare their own food. How the plants are preparing their own food? By the process of photosynthesis, right? We have already discussed about photosynthesis in our लोअर ग्रेड्स, राइट. 7th में फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा है. इसके अलावा हमने और जूनियर क्लासेस में भी प्लांट्स के बारे में पढ़ा है और प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ये भी डिस्कस किया हुआ है. ठीक है. सो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसकी वजह से प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर कर पाते हैं और हमारे अंदर ये प्रोसेस नहीं होता, तो इसलिए हम ये पूरा प्रोसेस करने के लिए जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल ही नहीं करते. तो इसलिए हम ऑटोट्रॉफ नहीं है, हम हेटरोट्रॉफ्स हैं, क्योंकि हम डिपेंड करते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स पे फॉर द फूड. ओके, सो फोटोसिंथेसिस ये भी अपने आप में 2 टर्म से बना हुआ है. ठीक है. सो फोटो मीन्स होता है लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स होता है टू प्रिपेयर. So the process that is going to prepare, to help you in preparing food, है ना, in presence of light. Okay, that process is called photosynthesis. Okay, here is the definition for you. So you can see what is photosynthesis. Photosynthesis, the process by which green plants make their own food, okay, with the help of carbon dioxide, water and in presence of chlorophyll and sunlight. ठीक है. अब presence of chlorophyll and sunlight एक condition है. ठीक है. Condition is there. What is the reactant used for the process of photosynthesis is carbon dioxide and water. These are required. Okay. So the carbon dioxide and water in presence of sunlight and chlorophyll will release carbohydrate, water and oxygen. Okay. Now this equation is not a balanced equation. You will not be writing this equation in your exams.
ओके, बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग टू राइट, अगर आप लिखते हैं इस इक्वेशन को तो ये गलत हो जाएगी क्योंकि ये बैलेंस नहीं है. सो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन आई होप आप सभी ने सीखा होगा केमिकल रिएक्शन चैप्टर में. जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, अगर नहीं सीखा है तो आप अभी हमारी वेबसाइट पे इसको चेक कर सकते हैं और सीख सकते हैं हाउ आर यू गोइंग टू लर्न अबाउट बैलेंसिंग योर केमिकल इक्वेशंस. ओके, सो लेट अस बैलेंस दिस इक्वेशन. तो अभी जो मेथड मैं यूज़ कर रही हूँ इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, उसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं. आपको लॉन्ग मेथड भी है जो कि आपके सिलेबस में है और आपको एग्जाम में इफ़ दे आर मेंशनिंग कि आपको लॉन्ग मेथड से इक्वेशन को बैलेंस करना है तो आप वैसे ही कीजिए. हिट एंड ट्रायल मेथड अभी अगर मेंशन नहीं है कि आपको इस इक्वेशन को किस पर्टिकुलर मेथड से बैलेंस करना है तो आप आराम से हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं. तो इसको मैं हिट एंड ट्रायल मेथड से करूँगी. कैसे करेंगे, अब आप देख सकते हो कि यहाँ कार्बन 6 है और यहाँ मेरे पास सिंगल कार्बन है. तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे रिएक्टेंट वाली जगह पे भी 6 कार्बन की रिक्वायरमेंट है. So I will be writing 6 over here, but when I will be writing 6 over here, so the number of oxygen will be 6 2s are 12 and 13. Here I need more oxygen, right? Here I need to balance in the product side. अभी फिर से यहाँ पे H12 लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2H2O, like you can see only H2O, that means only 2 hydrogen atom is there. सो अब इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे अगर मैं 6 लिख देती हूँ तो मेरा नंबर ऑफ ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होगा. सो यहाँ मैं 12 लिखूँगी एंड नाउ आई विल बी बैलेंसिंग द प्रोडक्ट्स. ओके, सो कार्बन मेरा 6 हो गया, हाइड्रोजन मेरा 12 हो गया. अब लेकिन यहाँ तो रिएक्टेंट्स में 24 है तो मुझे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक और 6 पुट करना पड़ेगा. यहाँ 6 2s are 12 एंड 12 नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए. अब ऑक्सीजन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन यहाँ पे 12 है और यहाँ पे भी 12, यानी कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 24. तो अब आप यहाँ देखो, यहाँ 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन है, यानी कि 12 ऑक्सीजन हो गया. अब यहाँ पे आई विल बी राइटिंग 6O2. सो हेयर अगेन the number of atoms in a reactant and a product बैलेंस हो गए. और अब ये मेरी करेक्ट इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की. और सनलाइट क्लोरोफिल को हम हमेशा एरो के ऊपर लिखते हैं क्योंकि ये कंडीशंस हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसके अलावा कई सारे केमिकल इक्वेशन में आप ये साइन भी देख सकते हो. सो दिस इज द इंडिकेशन दैट इज पर्टिकुलर इक्वेशन को हमने हीट के प्रेजेंस में किया हुआ है. ठीक है, सो जब हम एरो के ऊपर कुछ भी लिखते हैं तो दैट मीन्स दैट इज पर्टिकुलर कंडीशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस. ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड. आई होप photosynthesis definition is clear to all of you, that the process in which green plant prepare their food using carbon dioxide water in presence of sunlight and chlorophyll, and this is the balanced chemical equation to explain the process of photosynthesis. Okay, so by now I think you must be aware ki what are the conditions that are required for photosynthesis and what are the factors that can affect the photosynthesis. यानी कि क्या चीज़ अगर अवेलेबल नहीं है तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इफेक्ट होगा. लाइट अफेक्ट कर सकती है फोटोसिंथेसिस को, अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी अफेक्ट कर सकती है. ओके, क्लोरोफिल पिगमेंट, that is also very important, right? So let us discuss about some main events taking place during the process of photosynthesis. So you can see this is the raw material for the photosynthesis, carbon dioxide, water. And what is the site of photosynthesis where the process of photosynthesis is completed? It's the chloroplast, which is type of plastid present specifically in plant cells, and you can find chlorophyll pigment in some microbes which are performing the process of photosynthesis, right? So chloroplast is basically particular site for the process of photosynthesis. That is a plastid which contain chlorophyll pigment. Okay, and plant appear green because of the presence of chlorophyll pigment. Rather than chlorophyll, there are many more pigments present in plants which you can observe in flowers, fruits. क्योंकि वो तो green नहीं होते, वो तो अलग कलर के होते हैं, तो उनमें अलग अलग pigments होने की वजह से वो अलग अलग कलर शो करते हैं. ठीक है, so here is
the equation mentioned for the photosynthesis, which I already explained you. Now we are going to talk about the events of photosynthesis. So what all events takes place? As I told you कि ये प्रोसेस है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर यूज़ करके फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट, ठीक है. लेकिन क्या ये इतना सिंपल होता है? नहीं, ये इतना सिंपल नहीं होता है. ये जो प्रोसेस है ये मेनली 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है. तो पहली स्टेप जब हम मेंशन करते हैं तो फर्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन ऑफ solar energy, okay, with the help of chlorophyll. Okay, so with the help of chlorophyll absorption of sunlight will take place. Then as I think in grade 9th we learned about law of conservation of mass and also energy. तो इसमें हमने पढ़ा था energy can neither be created nor destroyed, और हम हमेशा इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. तो सोलर एनर्जी को यहाँ पहले हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे. ओके, सो द अदर स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी into chemical. Then the next is photolysis of water. as बहुत बार मैंने आपको बताया कि वाटर कार्बन डाइऑक्साइड इम्पॉर्टेंट रिएक्टेंट्स हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो वाटर का क्या रोल है अब हमें पता चलेगा, ठीक है. सो वाटर का ब्रेक डाउन होता है एज विद द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी. तो उसको उस स्टेप को हम कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ water. So here H2O is now splitting itself into hydrogen and oxygen. As हमने हमेशा पढ़ा है कि बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है. तो इस स्टेप में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और रिलीज हो जाती है, ठीक है. अब हमारे पास क्या बचा? हाइड्रोजन बचा और कार्बन डाइऑक्साइड बचा. तो जो लास्ट स्टेप होगी वो होगी रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू carbohydrates. Okay, so these are the steps of photosynthesis. In them 3 steps will require light, so we call it light reaction. And for this one you are not utilizing light, so this is called dark reaction. Okay, so these are the events of photosynthesis. How plant are absorbing water? They are absorbing it through the soil. Okay, with the help of xylem water is conducted to the leaves. There the process of photosynthesis will take place. Oxygen or gaseous exchange will take place with the help of special apparatus present in plants. Leaves में specially present होता है stomata. Okay, which is allowing movement of oxygen, carbon dioxide. Also it is helping in removal of excess of water through the process of transpiration. Okay, so here you can see the events are summed up. Absorption of sunlight by chlorophyll, then photolysis of water, and then how carbon dioxide converted into carbohydrates by the process of reduction. Now how come carbon dioxide reaching to the plants? Through the stomata. These are the tiny pores that are present on the surface of the leaves. Also they are present on undersides of the leaf. Okay, so they are helping with the exchange of gases. Rather than exchange of gases, they are also helping with other process called transpiration.
Okay, so what is transpiration? Transpiration is the process with which the water, excess water is released in the form of water vapors. Okay, plants are losing the amount of water with the help of this apparatus which is called stomata. You can see here this opening is known as stomatal pore. Okay, these kidney shaped cells around are called guard cells, and swelling of the guard cell or shrinking of the guard cell is regulating opening and closing of this stomata. Our opening or closing of stomata is very important for exchange of gases. Okay, so here stomata के दो रोल होते हैं, transpiration, exchange of gases. Now this was all about autotrophic nutrition. I hope this is clear to all of you, right? Now we will be talking about heterotrophic nutrition. अब मैंने बताया कि पूरे ऑर्गेनिजम्स अलग अलग होते हैं, उनका सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, किसी का टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी में प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम है. तो अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन भले ही वो हेट्रोट्रॉफिक परफॉर्म करेंगे, लेकिन सभी ऑर्गेनिज्म एक ही तरह का हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी परफॉर्म नहीं करते. ठीक है, सो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हम रिवाइज कर लेते हैं. हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या था? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर द फूड, दे आर नॉट प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड. ओके, सो अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो रहते हैं उनके भी टाइप्स हैं. तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? सो फर्स्ट इज होलोजोइक. होलोजोइक इज द मोड ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसमें स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन होता है. ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड का इंटेक होता है एंड दैट फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपलर वन, ओके, बाय द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स. सो एनिमल टेक्स इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड द बॉडी of an organism. Okay, example mention amoeba and other animals. Saprotrophic mode of nutrition in which an organism depends on dead and decaying material, that is not take. Saprotrophic nutrition में क्या होता है कि organism के अंदर वो process of digestion नहीं होता. They are pouring the digestive juices around the dead and decaying material and absorb nutrients. Okay, then we have parasitic mode of nutrition. Parasitic mode of nutrition में एक parasite होता है, एक host होता है, और जो parasite होता है वो host से अपना सारा nutrients का intake fulfill कर रहा है. अब जो parasites होते हैं they can be present outside and inside body of a host. So अगर वो body के अंदर है, inside the body of the host है, तो आप उन्हें कहते हो endoparasite. Okay, like we have liver fluke, okay, which is a type of animal, है ना, lower animal जो कि intestine में होता है. इसके अलावा outside की बात करते हैं तो लीच, लाइस, और उनको हम क्या कहते हैं? एक्सोपैरासाइट. So heterotrophic mode of nutrition, you can see holozoic, saprophytic and parasitic. And holozoic, animal takes in solid food and break it down inside the body. In the saprotrophic, they will be dependent on dead and decaying material for the food. And in the parasites will be living or they are dependent on host for the nourishment. I hope you are clear with the topics till here. Now we will be moving ahead towards the summary of today's class. So in today's class what we have discussed about what are the general characteristics of all the living organisms. Okay, so what are the general characteristics of all the living organisms? They are showing growth and development, they are showing body movements, they can reproduce, they are conscious, they are performing nutrition, respiration, excretion and circulation. Out of all these general characteristics, the processes that are ensuring the continuity of an individual, they are surviving because of those processes, तो हम उन्हें life processes कहते हैं. So in that we have discussed about nutrition. What is nutrition? The process with which an individual will intake all the essential nutrients so that they can show growth, development, get energy for themselves, right? Then nutrition cannot be performed in one way. So there are two types of nutrition, that is autotrophic, heterotrophic.
Then we have discussed in detail about how plants are preparing their own food. Okay, and we discussed about heterotrophic nutrition and the types. Okay, so I hope the topic for today is clear to all of you. For more details, you can always log into shikshartheducation.com and you can like, share and also subscribe to the channel so that you can get updated about the latest lectures. Thank you so much.